Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss how to download and install Python software. Follow the step, and the first step is open any browser and type www.python.org. So open any browser and type www.python.org and press enter button. Now the second step is click downloads and download the latest version. Go to downloads and download the latest version 3.8.3. Click. Downloading is complete. Now open download folder and double click on Python 3.8.3. First, add checkbox in add Python 3.8.2 path. ये checkbox basically हम इसलिए लगाते हैं जब हम अपना कोई प्रोग्राम कमांड मोड में रन करते हैं तो उसका आउटपुट हमें वहाँ से मिलता है। अगर ये चेकबॉक्स हम नहीं लगाते हैं तो हमें कमांड मोड में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। वो हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट सेलेक्ट चेकबॉक्स and second click install now option, but I am already installed in my machine, so I'm not installed. So after complete installation, go to start menu and type IDLE and click IDLE Python 3.6. 3.6 is my version. Now Python 3.6.6 cell is open. Here 3.6.6 is my version. Now we are discuss how to create or how to execute program in Python. But first you need one new folder where you save your program file, means Python file. आपको अपना एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा जहाँ पर आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को सेव करेंगे। सो फॉलो द स्टेप, ओपन दिस पीसी एंड सेलेक्ट एनी डिस्क, क्लिक राइट बटन, न्यू एंड फोल्डर. नाउ फोल्डर इज क्रिएटेड. गिव एनी नेम like no limits. After creating new folder, open Python shell and go to file option, take new file and write any program. For example, print, open close parenthesis in string form, type any message like hello world, close string, save your program, file, save option, select your disk, local disk E, no limits and give file name like first. Click on save option. One important point is while saving your program you can give any name, means आप अपने जब फाइल को सेव करते हैं तो आप वहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, बट द एक्सटेंशन मस्ट बी .py, मीन्स आपका जो एक्सटेंशन होगा फाइल के साथ वो .py होना चाहिए. नाउ गो टू रन ऑप्शन एंड रन मॉड्यूल 5. द आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड. सो ये हो गया आपका पाइथन सेल में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं एंड रन कैसे करते हैं. बट अगर सेम आउटपुट को हमें कमांड मोड में रन करना है तो उसे कैसे करेंगे. जैसा कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में चेक बॉक्स लगाने के लिए कहा था, जिसके थ्रू हम कमांड मोड में अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. सो फर्स्ट ओपन योर फोल्डर
where save your program and open folder no limits. In path type cmd and press enter. Now command promote is open and type python first डॉट पाई. सो फर्स्ट आपका यहाँ पर फाइल नेम है एंड डॉट पाई आपका एक्सटेंशन है. नाउ प्रेस एंटर एंड द सेम आउटपुट हेलो वर्ल्ड इज डिस्प्ले. सो इस वीडियो में हमने देखा पाइथन की इंस्टॉलेशन एंड पाइथन सेल में प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं एंड किसी आउटपुट को डिस्प्ले करना हो कमांड प्रमोट में तो कैसे रन करते हैं उसे. एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू गाइस.